श्री गणेशाय नमः। अथ श्री अगनासक गायत्री स्तोत्रम्। नारद उवाच भक्तानुकम्पिन् सर्वज्ञ हृदयं पापनाशनं गायत्र्याः कथितं तस्मात् गायत्र्याः स्तोत्रमीरय। आदिशक्ते जगन्मातर् भक्तानुग्रहकारिणी सर्वत्र व्यापिकेनन्ते श्रीसन्ध्ये ते नमोऽस्तुते। त्वमेव संध्या गायत्री सावित्री च सरस्वती ब्राह्मी च वैष्णवी रौद्री रक्ता श्वेता सितेतरा। प्रातर्बाला च मध्याह्ने यौवनस्था भवेत् पुनः। ब्रह्मा सायं भगवती चिन्ते मुनिभिः सदा। हंसस्था गरुडारूढा तथा वृषभवाहिनी ऋग्वेदाध्यायिनी भूमौ दृश्यते या तपस्विभिः। यजुर्वेदं पठन्ति च अन्तरिक्षे विराजते सा सामगापि सर्वेषु ब्राह्म्यमाणा तथा भुवि। रुद्रलोकं गता त्वमिहि विष्णुलोकनिवासिनी। त्वमेव ब्राह्मणो लोके मर्त्यानुग्रहकारिणी। सप्तर्षिप्रीतिजननी माया बहुवरप्रदा। शिवयोग कर्णे कर्णे त्रोत्था यश्वेद समुद्भवा। आनन्दजननी दुर्गा दशधा परिपठ्यते। वरेण्या वरदा चैव वरिष्ठा वरवर्णिनी। गरिष्ठा च वरारहा च वरारोहा च सप्तमी। नीलगंगा तथा संध्या सर्वदा भोगमोक्षदा। भागीरथी मर्त्यलोके पाताले भोगवत्यपि। लोकवाहिनी देवी स्थानत्रय निवासी। भूर्लोकस्था त्वमेवासि धरित्री लोकधारिणी। भवो लोके वायुशक्तिः स्वर्लोके तेजसां निधिः। महर्लोके महासिद्धिर्जनलोके जनेत्यपि। तपस्विनी तपोलोके सत्यलोके तु सत्यवाक्। कमला विष्णुलोके च गायत्री ब्रह्मलोकगा। रुद्रलोके स्थिता गौरी हरार्धांग निवासिनी। अहमो महतश्चैव प्रकृतिस्त्वं हि गीयते। साम्यावस्थात्मिका त्वं हि सबल ब्रह्मरूपिणी। ततः पराशक्तिः परमात्म हि गीयते। इच्छाशक्तिः क्रियाशक्तिर्ज्ञानशक्तिस्त्रिशक्तिदा। गंगा च यमुना चैव विपाशा च सरस्वती। सरयूर्देविका सिन्धुर्नर्मदेरावती तथा। गोदावरी शतद्रुश्च कावेरी देवलोकका। कौशिकी चंद्रभागा च वितस्ता च सरस्वती। गंडकी तापिनी तोया गौमती वेत्रवत्यपि। इडा च पिंगला चैव सुषुम्ना च तृतीयका। गांधारी हस्तिजिह्वा च पूषा तथैव च। अलम्बुसा कुहुश्चैव शंखिनी प्राणवाहिनी। नाड़ी च त्वं शरीरस्था गीयसे प्राप्त नैर्वधैर्य। हृत्पद्मस्था प्राणशक्तिः कंठस्था स्वप्ननायिका। तालुस्था त्वं सदाधारा विन्दुस्था विन्दुमालिनी। मूले तु कुण्डली शक्तिर्व्यापिनी केशमूलगा। शिखा मध्यासना त्वं हि शिखाग्रे तो मनोन्मनी। कमन्यद् वरुणोक्तेन यत्किञ्चित् जगत्त्रये तत्सर्वं त्वं महादेवी श्रिये सन्ध्ये नमोऽस्तुते। इतीदं कीर्तितं स्तोत्रं सन्ध्यायां बहुपुण्यदं। महापापप्रशमनं महासिद्धिविदायकं।
य इदं कीर्तयेत् स्तोत्रं सन्ध्याकाले समाहितः अपुत्रः प्राप्नुयात् पुत्रं धनार्थी धनमाप्नुयात् सर्वतीर्थतपोदान यज्ञयोगफलं लभेत् भोगान् भुक्त्वा चिरं कालमन्ते मोक्षमवाप्नुयात् तपस्विभिः कृतं स्तोत्रं स्नानकाले तु यः पठेत् यत्र कुत्र जले मग्नः सन्ध्यामज्जनजं फलं लभते नात्र सन्देहः सत्यं च नारद शृणुयाद्योऽपि तद्भक्त्या सा तु पापात् प्रमुच्यते पीयूषसदृशं वाक्यं सन्ध्योक्तं नारदेरितम् श्रीगायत्री देव्यार्पणमस्तु। नारद उवाच भक्तानुकम्पिन् सर्वज्ञ हृदयं पापनाशनं गायत्र्याः कथितं तस्मात् गायत्र्याः स्तोत्रमीरय आदिशक्ते जगन्मातर् भक्तानुग्रहकारिणी सर्वत्र व्यापिकेनन्ते श्रीसन्ध्ये ते नमोऽस्तुते त्वमेव सन्ध्या गायत्री सावित्री च सरस्वती ब्राह्मी च वैष्णवी औद्री रक्ता श्वेता सितेतरा प्रातर्बाला च मध्याह्ने यौवनस्था भवेत् पुनः ब्रह्मा सायं भगवती चिन्ते मुनिभिः सदा हंसस्था गरुडारूढा तथा वृषभवाहिनी ऋग्वेदाध्यायिनी भूमौ दृश्यते या तपस्विभिः यजुर्वेदं पठन्ति च अन्तरिक्षे विराजते सा सामगापि सर्वेषु ब्राह्म्यमाणा तथा भुवि रुद्रलोकं गता त्वमिहि विष्णुलोकनिवासिनी त्वमेव ब्राह्मणो लोके मर्त्यानुग्रहकारिणी सप्तर्षिप्रीतिजननी माया बहुवरप्रदा शिवयोः कर्णे कर्णे त्रोत्था यश्वेद समुद्भवा आनन्दजननी दुर्गा दशधा परिपठ्यते वरेण्या वरदा चैव वरिष्ठा वरवर्णिनी गरिष्ठा च वरारहा च वरारोहा च सप्तमी नीलगंगा तथा संध्या सर्वदा भोगमोक्षदा भागीरथी मर्त्यलोके पाताले भोगवत्यपि लोकवाहिनी देवी स्थानत्रय निवासी भूर्लोकस्था त्वमेवासि धरित्री लोकधारिणी भवो लोके वायुशक्तिः स्वर्लोके तेजसां निधिः महर्लोके महासिद्धिर् जनलोके जनेत्यपि तपस्विनी तपोलोके सत्यलोके तु सत्यवाक् कमला विष्णुलोके च गायत्री ब्रह्मलोकगा रुद्रलोके स्थिता गौरी हरार्धांग निवासिनी अहमो महतश्चैव प्रकृतिस्त्वं हि गीयते साम्यावस्थात्मिका त्वं हि सबल ब्रह्मरूपिणी ततः पराशक्तिः परमात्म हि गीयते इच्छाशक्तिः क्रियाशक्तिर्ज्ञानशक्तिस्त्रिशक्तिदा गंगा च यमुना चैव विपाशा च सरस्वती सरयूर्देविका सिन्धुर् नर्मदे रावती तथा गोदावरी शतद्रुश्च कावेरी देवलोकका कौशिकी चंद्रभागा च वितस्ता च सरस्वती गंडकी तापिनी तोया गौमती वेत्रवत्यपि इडा च पिंगला चैव सुषुम्ना च तृतीयका गांधारी हस्तिजिह्वा च पूषा तथैव च अलम्बुसा कुहुश्चैव शंखिनी प्राणवाहिनी नाड़ी च त्वं शरीरस्था
गीयसे प्राप्त नैर्वधैर्य हृत्पद्मस्था प्राणशक्तिः कंठस्था स्वप्ननायिका तालुस्था तुम सदा धारा विन्दुस्था बिन्दुमालिनी मूले तु कुण्डली शक्तिर्व्यापिनी केशमूलगा शिखा मध्यासना त्वं हि शिखाग्रे तो मनोन्मनी कमन्यद् वौनोक्तेन यत्किञ्चित् जगति त्रये तत्सर्वं त्वं महादेवी श्रिये सन्दे नमोऽस्तुते इतीदं कीर्तितं स्तोत्रं सन्ध्यायां बहुपुण्यदं महापापप्रशमनं महासिद्धिविदायकं य इदं कीर्तयेत् स्तोत्रं सन्ध्याकाले समाहितः अपुत्रः प्राप्नुयात् पुत्रं धनार्थी धनमाप्नुयात् सर्वतीर्थतपोदान यज्ञयोगफलं लभेत् भोगान् भुक्त्वा चिरं काल मन्ते मोक्षमवाप्नुयात् तपस्विभिः कृतं स्तोत्रं स्नानकाले तु यः पठेत् यत्र कुत्र जले मग्नः सन्ध्यामज्जनजं फलं लभते नात्र सन्देहः सत्यं च नारद शृणुयाद्योऽपि तद्भक्त्या सा तु पापात् विमुच्यते पीयूषसदृशं वाक्यं सन्ध्योक्तं नारदेरितं श्रीगायत्री देव्यार्पणमस्तु। नारद उवाच भक्तानुकम्पिन् सर्वज्ञ हृदयं पापनाशनं गायत्र्याः कथितं तस्मात् गायत्र्याः स्तोत्रमीरय आदिशक्ते जगन्मातर् भक्तानुग्रहकारिणी सर्वत्र व्यापिके नन्ते श्रीसन्ध्ये ते नमोऽस्तुते त्वमेव सन्ध्या गायत्री सावित्री च सरस्वती ब्राह्मी च वैष्णवी रौद्री रक्ता श्वेता सितेतरा प्रातर्बाला च मध्याह्ने यौवनस्था भवेत् पुनः ब्रह्मा सायं भगवती चिन्ते मुनिभिः सदा हंसस्था गरुडारूढा तथा वृषभवाहिनी ऋग्वेदाध्यायिनी भूमौ दृश्यते या तपस्विभिः यजुर्वेदं पठन्ति च अन्तरिक्षे विराजते सा सामगापि सर्वेषु ब्राह्म्यमाणा तथा भुवि रुद्रलोकं गता त्वं हि विष्णुलोकनिवासिनी त्वमेव ब्राह्मणो लोके मर्त्यानुग्रहकारिणी सप्तर्षिप्रीतिजननी माया बहुवरप्रदा शिवयोः कर्णे कर्णे त्रोत्था यश्वेद समुद्भवा आनन्दजननी दुर्गा दशधा परिपठ्यते वरेण्या वरदा चैव वरिष्ठा वरवर्णिनी गरिष्ठा च वरार्हा च वरारोहा च सप्तमी नीलगंगा तथा संध्या सर्वदा भोगमोक्षदा भागीरथी मर्त्यलोके पाताले भोगवत्यपि लोकवाहिनी देवी स्थानत्रय निवासी भूर्लोकस्था त्वमेवासि धरित्री लोकधारिणी भवो लोके वायुशक्ति स्वर्लोके तेजसां निधि महर्लोके महासिद्धिर् जनलोके जनेत्यपि तपस्विनी तपोलोके सत्यलोके तु सत्यवाक् कमला विष्णुलोके च गायत्री ब्रह्मलोकगा रुद्रलोके स्थिता गौरी हरार्धांग निवासिनी अहमो महतश्चैव प्रकृतिस्त्वं हि गीयते साम्यावस्थात्मिका त्वं हि सबल ब्रह्मरूपिणी ततः परा पराशक्तिः परमात्म हि गीयते इच्छाशक्तिः क्रियाशक्तिर्ज्ञानशक्तिस्त्रिशक्तिदा गंगा च यमुना चैव विपाशा च सरस्वती
सरयूर्देविका सिंधुर नर्मदे रावती तथा गोदावरी सततृश्च कावेरी देवलोतका कौशिकी चंद्रभागा च वितस्ता च सरस्वती गंडकी तापिनी तोया गौमती वेत्रवत्यपि इडा च पिंगला चैव सुषुम्ना च तृतीयका गांधारी हस्तिजिह्वा च पूषा पूषा तथैव च अलम्बुसा कुहुश्चैव शंखिनी प्राणवाहिनी नाड़ी च त्वं शरीरस्था गीयसे प्राप्त नैरोधैर्य हृत्पद्मस्था प्राणशक्तिः कंठस्था स्वप्ननायिका तालुस्था त्वं सदाधारा विन्दुस्था विन्दुमालिनी मूले तु कुण्डली शक्तिर्व्यापिनी केशमूलगा शिखा मध्यासना त्वं हि शिखाग्रे तो मनोन्मनी कमन्यद् वौनोक्तेन यत्किञ्चित् जगत्त्रये तत्सर्वं त्वं महादेवी श्रिये सन्दे नमोऽस्तुते इतीदं कीर्तितं स्तोत्रं सन्ध्यायां बहुपुण्यदं महापापप्रशमनं महासिद्धिविदायकं य इदं कीर्तयेत् स्तोत्रं सन्ध्याकाले समाहितः अपुत्रः प्राप्नुयात् पुत्रं धनार्थी धनमाप्नुयात् सर्वतीर्थतपोदान यज्ञयोगफलं लभेत् भोगान् भुक्त्वा चिरं काल मन्ते मोक्षमवाप्नुयात् तपस्विभिः कृतं स्तोत्रं स्नानकाले तु यः पठेत् यत्र कुत्र जले मग्नः सन्ध्यामज्जनजं फलं लभते नात्र सन्देहः सत्यं च नारद शृणुयाद्योऽपि तद्भक्त्या सा तु पापात् विमुच्यते पीयूषसदृशं वाक्यं सन्ध्योक्तं नारदेरितं श्रीगायत्री देव्यार्पणमस्तु। नारद उवाच भक्तानुकम्पिन् सर्वज्ञ हृदयं पापनाशनं गायत्र्याः कथितं तस्मात् गायत्र्याः स्तोत्रमीरय आदिशक्ते जगन्मातर् भक्तानुग्रहकारिणी सर्वत्र व्यापिके नन्ते श्रीसन्ध्ये ते नमोऽस्तुते त्वमेव सन्ध्या गायत्री सावित्री च सरस्वती ब्राह्मी च वैष्णवी औद्री रक्ता श्वेता सितेतरा प्रातर्बाला च मध्याह्ने यौवनस्था भवेत् पुनः ब्रह्मा सायं भगवती चिन्ते मुनिभिः सदा हंसस्था गरुडारूढा तथा वृषभवाहिनी ऋग्वेदाध्यायिनी भूमौ दृश्यते या तपस्विभिः यजुर्वेदं पठन्ति च अन्तरिक्षे विराजते सा सामगापि सर्वेषु ब्राह्म्यमाणा तथा भुवि रुद्रलोकं गता त्वं हि विष्णुलोकनिवासिनी त्वमेव ब्राह्मणो लोके मर्त्यानुग्रहकारिणी सप्तर्षिप्रीतिजननी माया बहुवरप्रदा शिवयोः कर्णे कर्णे त्रोत्था यश्वेद समुद्भवा आनन्दजननी दुर्गा दशधा परिपठ्यते वरेण्या वरदा चैव वरिष्ठा वरवर्णिनी गरिष्ठा च वरार्हा च वरारोहा च सप्तमी नीलगंगा तथा संध्या सर्वदा भोगमोक्षदा भागीरथी मर्त्यलोके पाताले भोगवत्यपि लोकवाहिनी देवी स्थानत्रय निवासी भूर्लोकस्था त्वमेवासि धरित्री लोकधारिणी भवो लोके वायुशक्ति स्वर्लोके तेजसां निधि महर्लोके महासिद्धिर्
जनलोके जनेत्यपि तपस्विनी तपोलोके सत्यलोके तु सत्यवाक् कमला विष्णुलोके च गायत्री ब्रह्मलोकगा रुद्रलोके स्थिता गौरी हरार्धांग निवासिनी अहमो महतश्चैव प्रकृतिस्त्वं हि गीयते साम्यावस्थात्मिका त्वं हि सबल ब्रह्मरूपिणी ततः पराशक्तिः परमात्म हि गीयते इच्छाशक्ति क्रियाशक्तिर्ज्ञानशक्ति त्रिशक्तिदा गंगा च यमुना चैव विपाशा च सरस्वती सरयूर्देविका सिन्धुर्नर्मदे रावती तथा गोदावरी शतद्रुश्च कावेरी देवलोकका कौशिकी चंद्रभागा च वितस्ता च सरस्वती गंडकी तापिनी तोया गौमती वेत्रवत्यपि इडा च पिंगला चैव सुषुम्ना च तृतीयका गांधारी हस्तिजिह्वा च पूषा तथैव च अलम्बुसा कुहुश्चैव शंखिनी प्राणवाहिनी नाड़ी च त्वं शरीरस्था गीयसे प्राप्त नैर्वधैः हृत्पद्मस्था प्राणशक्तिः कंठस्था स्वप्ननायिका तालुस्था त्वं सदाधारा विन्दुस्था विन्दुमालिनी मूले तु कुण्डली शक्तिर्व्यापिनी केशमूलगा शिखा मध्यासना त्वं हि शिखाग्रे तो मनोन्मनी कमन्यद वहुनोक्तेन यत्किञ्चित् जगत्त्रये तत्सर्वं त्वं महादेवी श्रिये सन्दे नमोऽस्तुते इतीदं कीर्तितं स्तोत्रं सन्ध्यायां बहुपुण्यदं महापापप्रशमनं महासिद्धिविदायकं य इदं कीर्तयेत् स्तोत्रं सन्ध्याकाले समाहितः अपुत्रः प्राप्नुयात् पुत्रं धनार्थी धनमाप्नुयात् सर्वतीर्थतपोदान यज्ञयोगफलं लभेत् भोगान् मुक्त्वा चिरं काल मन्ते मोक्षमवाप्नुयात् तपस्विभिः कृतं स्तोत्रं स्नानकाले तु यः पठेत् यत्र कुत्र जले मग्नः सन्ध्यामज्जनजं फलं लभते नात्र सन्देहः सत्यं च नारद शृणुयाद्योऽपि तद्भक्त्या सा तु पापात् विमुच्यते पीयूषसदृशं वाक्यं सन्ध्योक्तं नारदेरितं श्रीगायत्री देव्यार्पणमस्तु।